Hello students, today my topic is testing for gases like oxygen gas, hydrogen gas and carbon dioxide gas for class 10th. Now we are conducting a large number of experiments in chemistry lab and different types of gases are released during the chemical reaction. Here how can you test the presence of hydrogen gas, oxygen gas and carbon dioxide gas. So we can test the presence of these gases with the help of splint test. Now what is the meaning of splint here? Splint is equipment made up of wood and it is 15 centimeter long. ये मैच स्टिक की तरह होता है, मैच स्टिक से थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ये बिल्कुल मैच स्टिक की तरह होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं लेकिन. So here hydrogen gas, oxygen gas and carbon dioxide gas, these gases are colorless in nature and odorless. मतलब ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें स्मेल नहीं होते. इसलिए हम लोग क्या होता है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये गैसेस रिलीज होती है तो हम ये पता नहीं कर पाते कि कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है या ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है, क्योंकि ये ऑर्डरलेस होते हैं और कलरलेस भी होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? सपोज दैट we are conducting any chemical reaction through which carbon dioxide gas is released. Now how can you test the presence of carbon dioxide gas? First method is splint test. When you bring burning matchstick or burning split near the mouth of the test tube, then what happens? The burning matchstick or burning splint will be extinguished. मतलब कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, अगर हम उसके माउथ पे कोई बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं या बर्निंग स्प्लिट ले जाते हैं तो क्या होता है, बुझ जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, उस केमिकल रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं ये क्या करता है, आग को बुझा देता है. नाउ नेक्स्ट मेथड थ्रू विच वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लाइम वाटर टेस्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइम वाटर एंड स्लेट लाइम? बोथ आर मेड अप ऑफ calcium hydroxide. Slaked lime is also made up of calcium hydroxide or lime water is also made up of calcium hydroxide. Now what is the difference between these two? Slaked lime is suspension. It is a suspension of calcium hydroxide. But lime water is aqueous solution of calcium hydroxide. Lime water क्या होता है, solution होता है calcium hydroxide का, और ये क्या होते हैं, colorless होते हैं. जो lime water होता है ये colorless होता है. So next method is lime water test. With the help of this we can test the presence of carbon dioxide gas. Now here splint test, CO2 extinguish the fire. Next is lime water test. Lime water turns into milky color, means when carbon dioxide gas is passed through lime water is colorless in nature. It turns into milky due to the formation of insoluble calcium carbonate. Means when carbon dioxide gas is passed through lime water, and lime water क्या होता है, colorless होता है. So when carbon dioxide gas passed through lime water and it turns milky due to the formation of insoluble calcium carbonate. So this is the method through which we can test the presence of carbon dioxide gas. Now next question is, what happens when excess of carbon dioxide gas is passed through lime water? When excess of carbon dioxide is passed through lime water, then what happens? Milkiness disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate. Now here, when limited amount of carbon dioxide gas pass through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate, and calcium carbonate is insoluble in water. Now next is, when excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, then milkiness disappear. And why milkiness disappear? Due to the formation of calcium hydrogen carbonate, and it is soluble in nature. So here carbon dioxide passed through lime water, turns milky due to the formation of calcium carbonate. Here next is, excess of carbon dioxide passed through lime water, it turns, means here milkiness disappear and due to the formation of calcium hydrogen carbonate, and calcium hydrogen carbonate is soluble in nature. Now next is test for hydrogen gas.
how can you test the presence of hydrogen gas? Now suppose that we are conducting chemical reaction here. When zinc react with dilute H2SO form to form zinc sulfate and hydrogen gas. Here hydrogen gas is released. Suppose that we are conducting this chemical reaction in a test tube. When you bring burning match stick or burning split near the mouth of the test tube and the pop sound will be produced, it means that hydrogen gas is released. Now why here hydrogen gas produce pop sound? Because when you bring burning match stick or burning splint near the mouth of the test tube, and when hydrogen gas is contact with this match stick, burning match stick, then the chemical bond between the hydrogen atom is break down and pop sound will be produced. Means जैसे ही हाइड्रोजन गैस उस बर्निंग मैच स्टिक के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और पॉप साउंड हमें सुनाई देता है. सो पॉप साउंड इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस. So here test for hydrogen gas. How can you test the presence of hydrogen gas? With the help of splint test, and pop sound will be produced. Now next is test for oxygen gas. Means how can you test the presence of oxygen gas during the chemical reaction? Suppose that we are doing any chemical reaction through which oxygen gas is released. When you bring burning splint or burning matchstick near the mouth of the test tube, if the burning matchstick will be glow brightly, it means that oxygen gas is released here, and we know that oxygen gas is the supporter of combustion. Means अगर हम burning matchstick को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो बर्निंग मैच स्टिक है वो और तेज़ से जलने लगेगा, मतलब उसकी फ्लेम की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, उस केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस क्या है, इट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन. थैंक यू एंड वॉचिंग फॉर माई वीडियो.